Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am your computer teacher, Sir Amir from Satkan Education Services. Today we are going to start revision of chapter number 4, Application Software. Contents of this chapter. Number 1, type of software. Number 2, system software. Number 3, application software. Number 4, types of application software. Number 5, educational software. Number 6, design software. Number 7, word processing software. Number 8, spreadsheet. ये सब इस चैप्टर के वो टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सॉफ्टवेयर और टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी नए टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक नज़र डालना चाहेंगे कि सॉफ्टवेयर और टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होते हैं. सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर बेसिकली वो प्रोग्राम्स या वो प्रीडिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको फॉलो करते हुए कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म करता है. सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. The first topic of this video is types of software. There are two major types of software. Number 1, system software. Number 2, application softwares. System software. System software helps to run the computer. It does not have any other use. It is a set of programs that enable a computer to perform routine tasks such as startup, managing files, and shutting down. सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि सिस्टम को रन करने के लिए या सिस्टम को स्टार्टअप देने के लिए यूज़ किए जाते हैं. इट इज़ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस, वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को मिलती है, यानी प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कि कंप्यूटर ने पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कौन सा डेस्कटॉप आएगा, कौन कौन से आइकॉन डिस्प्ले होंगे. ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके हार्डवेयर को फंक्शनल करने में मदद देते हैं और इन्हीं की मदद से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन करते हैं. विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट रन. Application software. Application software consists of computer programs that enable us to perform a variety of specific tasks. These tasks include listening music, designing product, or communicating with each other users. Different application software is used to perform each type of task. Application software इसकी शॉर्ट फॉर्म है ऐप, APP. हम नॉर्मल लाइफ में अगर देखें तो हम आप कहते हैं कि डाउनलोड द ऐप, डिलीट द ऐप, रीलोड द ऐप. यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की. हम कह रहे हैं अगर डाउनलोड द ऐप तो मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कर लें. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आपकी एक प्रीडिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिस तरह के आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन फ़र्क इसमें ये होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास MS वर्ड है, MS पेंट है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है, एडोब फोटोशॉप है. ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं.
ہر ایپلیکیشن سافٹ ویئر کا اپنا ایک اسپیسیفک ٹاسک ہوتا ہے. جس طرح آپ کا ایم ایس ورڈ ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کا ورڈ پروسیسر ہے. یعنی جتنا بھی ہمارا رائٹنگ کا کام ہوتا ہے، ٹائپنگ کا کام ہوتا ہے، ہم اس کو ایم ایس ورڈ میں کرتے ہیں. کہ ایم ایس ورڈ کی ٹاسک ہے اٹس اے رائٹنگ پیکج. اس کے علاوہ آپ کا ایم ایس ایکسل ہے اسپریڈ شیٹ کے لیے، کہ ہم اس میں آپ کی اسپریڈ شیٹ ہی بنا سکتے ہیں. ایم ایس پینٹ ہے، اس میں ہم جا کر صرف پینٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کا ملٹی میڈیا ہے یا ون ہے میں آپ کا، وہاں پہ آپ کیا میوزک لسن کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ کے جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں یہ اپلیکیشن سافٹ ویئرز ہیں، اور ان کا ہر سافٹ ویئر کا ایک خاص کام ہوتا ہے. Educational software. Educational software can be used to provide learning material, examples, and tests on different topics. Reference software consists of our dictionaries and encyclopedias that can be stored on CD. Educational software can be used to teach young children before they start school. It also helps school students to continue their learning outside the classroom. Using education software for education and learning is also called computer aided learning (CAL). ایجوکیشنل سافٹ ویئر. ایجوکیشنل سافٹ ویئر جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ تمام ایپلیکیشن سافٹ ویئر کسی اسپیسیفک ٹاسک کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، اور ایجوکیشنل سافٹ ویئر بھی آپ کا ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے جس کا پرپس ہے ایجوکیشن لرننگ. یعنی اس میں آپ کو لرننگ مٹیریلز ملتے ہیں، ایگزامپلز ملتے ہیں، مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر. ان کو ہم ایجوکیشنل سافٹ ویئر کہتے ہیں. یعنی ایسے سافٹ ویئر جس کی مدد سے آپ لرننگ کر رہے ہوں، جس کی مدد سے آپ اسٹڈی کر رہے ہوں، جس کی مدد سے آپ کے نالج میں اضافہ ہو رہا ہو، اس طرح کے سافٹ ویئرس کو ہم کہتے ہیں ایجوکیشنل سافٹ ویئر. فار ایگزامپل آپ کے پاس انسائکلوپیڈیا ہے، یعنی کسی کے بارے میں اگر آپ کسی بھی چیز کے، کسی بھی جگہ کے، کسی بھی شخصیت کے بارے میں یا کسی ورڈ کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیل انفارمیشن چاہتے ہیں تو آپ کے پاس انسائکلوپیڈیا ہے، وہ آپ کو اس کی پوری ہسٹری پرووائڈ کر دے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈائریکٹ ڈکشنریز ہوتی ہیں. آپ کے پاس ڈکشنریز میں جیسے آپ نارملی آپ کی ڈکشنری بکس ہوتی ہیں، اس میں آپ جا کے ورڈ اور میننگ سرچ کرتے ہیں. اگر آپ ایجوکیشنل سافٹ ویئر میں ڈکشنری اپلوڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کا کیا کام ہوتا ہے کہ آپ اس ڈکشنری میں ایزیلی کسی ورڈ کے میننگ اردو میں اور انگلش میں دونوں میں آپ آسانی سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں. ایجوکیشنل سافٹ ویئر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بالکل اسٹارٹ میں اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں ان کو اسکول ایڈمیشن سے پہلے اگر ان کو اس طرح کے سافٹ ویئر دکھائے جائیں تو وہ بیسک جو ایجوکیشن ہے وہ اس سے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کاؤنٹنگ ہو گئی آپ کی، یا اے بی سی ڈی ہو گئی آپ کی. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئر ہیں یا پلس کے، مائنس کے، ملٹیپلائی کے، یہ ان کو اگر شروع میں دکھایا جائے تو آسانی سے ان چیزوں کو مطلب انٹرسٹنگ وے میں کلک کر سکتے ہیں. اس طرح اگر بڑے بچے ہیں جو اسکول جا رہے ہیں، لیکچر سن رہے ہیں، اسٹڈیز لے رہے ہیں اسکول میں اپنے کلاس روم میں، اور کوئی ٹاپک ایسا ہے جو ان کو لیے کنفیوزنگ ہے، تو وہ ان ایجوکیشنل سافٹ ویئر کی مدد سے اس ٹاپک کو سرچ کر کر اس کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن ود دی ہیلپ آف ایجوکیشنل سافٹ ویئر لے سکتے ہیں. Design software. Design software helps people create new designs for product. It also helps people in factories to make those products in less time and with less effort. It is used in manufacturing hardware and developing software. Design software can be used to give instructions to machines and develop software that is easy for users to understand and make programs in. Design software is widely used by engineers to develop better products faster. Design software. It is also an application software. ڈیزائن سافٹ ویئر بالکل اس کے نام کی طرح یہ سافٹ ویئر ہے، یعنی ایسا اپلیکیشن سافٹ ویئر جس میں آپ ڈیزائننگ کرتے ہیں.
अब डिज़ाइनिंग चाहे वो आपके फैब्रिक प्रिंटिंग हो, चाहे वो आपके आर्किटेक्चर का काम हो, या आपका कोई और प्रोडक्ट आप डिज़ाइन करना चाहें, तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। नॉर्मली ये सॉफ्टवेयर जो है इंजीनियर्स या आर्किटेक्चर्स इसको यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसको अपनी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में इस सॉफ्टवेयर की मदद से मशीन भी चलाते हैं। जो मशीन हमारी कंप्यूटराइज होती हैं, उसमें डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पस। Word processing software. Word processor serve multiple purposes such as creating a variety of documents, editing them, and printing them. They can be used to generate report, pamphlets, brochures, letter, advertisement, speeches, and so on. Popular word processors are WordPad, Notepad, and Microsoft Word. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या एमएस वर्ड या वर्ड प्रोसेसर, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तमाम जितने भी हमने अब तक पढ़ी चीज़ें वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में है, तो ये भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसका पर्पस क्या है कि यहाँ हम जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, जिनमें राइटिंग का काम हो, एडिटिंग का काम हो या प्रिंटिंग का काम हो, वो सारे काम इस वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से बआसानी किए जा सकते हैं। अगर वर्ड प्रोसेसर आपके पास है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपके पास है, आपके पास नोट पैड है, आपके पास वर्ड है या वर्ड पैड है आपके पास, तो आप उसमें अपने किसी भी किस्म की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, आप पम्फलेट बना सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं, स्पीच लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है कि ईजीली आप एमएस वर्ड में या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। नॉर्मली जो हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उनमें जो मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर है वो आपका वर्ड पैड है, नोट पैड है, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। Spreadsheet software. Spreadsheet software helps users work with numbers. It enables users to make complex calculations very easily. It can be used to prepare expense report and financial statement. Preparing these documents using a computer is much easier and quicker than preparing them using paper and calculator. MS Excel is a popular spreadsheet program, but others are also used. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें जितना भी हमारा डेटा होता है, जितना भी हम जो भी एंट्री करते हैं अपने इस सॉफ्टवेयर में, वो हम रॉज और कॉलम में करते हैं। यानी हमारे स्प्रेडशीट में यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में जो हमारे पास स्क्रीन आता है वो रॉज और कॉलम्स में मिलता है, यानी इंटरसेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम। द इंटरसेक्शन ऑफ अ रॉ एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल, यानी जो आपका एक बॉक्स है इस स्प्रेडशीट में, उस बॉक्स को हम सेल कहते हैं, और जितना भी डेटा हम इंटर करते हैं वो इस सेल के अंदर इंटर करते हैं। ये रॉज और कॉलम या सेल बहुत सारी शीट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी आपका जो फर्स्ट पेज है उसको हम शीट 1 कहते हैं, उसके बाद सेकंड पेज आएगा वो शीट 2 कहलाएगा, और इन सब में आपके पास रॉज और कॉलम होंगे यानी सेल्स होंगे, और इन सेल में हम अपना डेटा रखते हैं, और इन सेल की मदद से ही तमाम कैलकुलेशन का काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। ये जो आपकी स्प्रेडशीट होती है इसमें आपके बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं, यानी आपको इस सॉफ्टवेयर के साथ कुछ फार्मूले प्रोवाइड किए जाते हैं जिनकी मदद से आप अपने अकाउंटिंग और अपने कैलकुलेशन को आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान तरीके से उनका सलूशन निकाल सकते हैं। इस स्प्रेडशीट में
گرافک کی مدد سے ہم مختلف قسم کے چارٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کون سی ویلیو زیادہ ہے اور کون سی ویلیو اس میں کم ہے، یا ویدر فورکاسٹنگ میں آپ کی یہ اسپریڈ شیٹ ود دی ہیلپ آف چارٹ یوز کی جاتی ہے. ایک گراف بناتا ہے جس میں آپ کے ویدر کو اپ اینڈ ڈاؤن شکل میں دکھایا جاتا ہے. دا بیسٹ ایگزامپل آف اسپریڈ شیٹ جو کہ ہم عام طور پہ آج کل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں دیٹ از ایم ایس ایکسل. Question number 1. Differentiate between application software and system software with the help of examples. Answer: System software. System software is responsible for the running and maintenance of a computer system. It cannot perform a specific task. Example: operating system. Application software. Application software consists of programs that enable us to perform a variety of specific tasks. Example: word processor. Question number 2. What is educational software used for? Answer: Educational software is used to provide interactive exercise on various topics. It offers interesting activities that make learning enjoyable. Educational software comes in the form of dictionaries, encyclopedias, and educational games. It can be used to educate young children at home and to train people in large offices. It's time for your home task. Question number 1. What is desktop publishing software? Answer: Desktop publishing software. Desktop publishing software is a type of application software. It is used to produce documents like banner, books, greeting cards, and posters. Desktop publishing enables us to combine text and graphics to produce information and attractive documents. It also helps us to produce such document in less time. Question number 3. How do different types of design software help people who work in factories? Answer: Design software helps people who work in factories by controlling machines to perform different tasks. Computer aided manufacturing (CAM) uses computers to control robots and machines that can perform dangerous tasks such as welding and lifting heavy objects. This helps to avoid injuries to factory workers. Students, do neat and clean work in your computer copy. We will meet in the next session inshallah ta'ala. Till then, Allah Hafiz. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.